Hello. Hello. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज आ रही ना सर मेरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, ओके। तो sequence and series we are going to start. Your topic name is infinite series. So we यस should सर। go for some basic converts. First you should understand what is the sequence, then series, यस then you can go for infinite series. Okay. ओके सर। To यस सर। understand the concept of sequence, I am giving some best examples. First of all, you should know arithmetic progression here. See, I am writing एपी some सर। AP. Yes, this is the short form AP. Okay. Yes, the screen is visible for you. यस सर, स्क्रीन इज विजिबल। Yes. So now you see the general term is what? Like A, comma, A plus D, comma, A plus 2D, comma, and so on. It will be goes up to nth term, and before nth term there is a term that is called n minus 1th term. This is the general term of arithmetic progression. To understand this general term, let us take one example: 2, comma, 4, comma, 6, and so on. Okay. What is the first term here? ओके सर। What is the first term here? Tell me. टू 2. टू टू टू। First term is 2. What is the difference between the next यस। term? How much difference is there? टू सर। डी 2. डी इज टू, डी इज टू सर। These 2 means that a general formula also we can write it, that is called T2 minus T1. The difference between second term and the first term. It is not compulsory to take the second term. If you take the third term minus second term also, you will get the D value, same value. How much we are getting? We are getting 2 now. यस सर। Common difference is 2. Now this is called the first term as well as the value of A. T1, it means the first term, and as well as the value of A. And this is called the second term, denoted with T2. And this is called the यस। third term, denoted with T3. टी Like that. थ्री। These are the 3 terms. Suppose if I want to find a particular term, like मैं आपसे पूछा, what is the 8th term of this progression? So what will be your यस सर। answer? So to get that term, particular term find out करने का एक formula है. That formula is called Tn is equals to A plus n minus 1 एन माइनस वन इंटू डी। to D. Okay. Which term यस we सर। required? Which term we required? Tell me. Which term we required? We एट required the एट 8th term. So we should write the formula will be T8 is equal टू to, प्लस very good, 2 plus, come टू on, प्लस सेवन इंटू टू। 8 minus 1 into 2, right? टू यस। That is equals to 2 plus, 16 सर। this is 7 twos are right. So like that 7 twos are यस 14 plus 2 is equal to 16. So it means that this यस formula सर। we can apply to find out a particular term. कोई भी यस सर। सीरीज का पर्टिकुलर टर्म अगर आपको चाहिए तो यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट, राइट डाउन. ओके, सो आप क्या करिए, आप कॉपी मत करिए. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ. ओके सर, मैं कॉपी कर रहा था। कॉपी मत करिए, जरूरत नहीं, इससे टाइम वेस्ट होता आपके पास. ठीक है, मैं जी सर, आपको सही। पीडीएफ भी सेंड ओके, कर दूं, मैं बस रिकॉर्डिंग भी समझ सेंड, कर रहा था, आप पीडीएफ भेज दी। पीडीएफ भी भेजता हूँ, रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ, डोंट वरी. ओके सर, थैंक यू। Okay, so this is the first nth यस term. This formula is for nth term, particularly any term if you want nth term formula, nth term. यस सर। Okay, nth term। now suppose if I want the sum of nth term, sum of nth term, यस सर। sum of nth term, sum of nth term, that will be represented with Sn, that will be represented with Sn, and our formula will be n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. 2a डी। plus n यस सर। minus 1 into d. Like a previous example only. How many terms we have? 2 comma 4 comma 6. कॉमा Yeah, na? 6। 3 terms.
अगर ये 3 terms, जी suppose सर। if you want to add, what will be our answer? 12 na? 12 सर। 12. जी सर। We have only 3 terms, then only we can easily add these 3 terms. Suppose if you have 100 terms, then is it possible to add Yeah. within 1 minute? No sir, we Not have possible. to So do for that, lot of work. So I we thought, have to apply this formula in that case. yes sir. Understood? Now verification. What is n value? How many terms are there? How 3 many terms. 3 terms. So n value will be 3. I am taking. It is equal to, Yes sir. it will be 3 by 2 into 2 into, what is the value of a here? 2 now. 2, yes sir, 2. Plus it is 3 minus 1 into their common difference will be again 2 only, right? Yes sir. Yes. This is equals to n by 3 by 2 into 2 2s are 4 plus 3 minus 1 is 2, 2 2s are again 4. It will be equal to 4. 3 by 2 into 4 plus 4 is what? How much? 8. 2 1s are 8, 2 8. 4s These are are 24, 12. So verification now, this is 12, right? Yes. Yes, Yes sir, so correct. this formula we can use it in progression. And one more, that is a shortcut, short trick to remember the formula, that is called n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2. Sum of, सर आपका स्क्रीन नहीं दिख visible नहीं है? सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा। It's not visible. हाँ सर, स्क्रीन थोड़ा isn't visible. इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है बॉस, थोड़ा मैनेज करिए आते हाँ जाते। दिख गया सर, दिख गया सर। जी सर, दिख गया। Now it's okay. Yes sir, S1 is equal to n into n plus n 1 into by n 2. plus 1 by 2. How many n values are there? Suppose if I want to add this same example, 2 4 6 का ही example ले 4, रहा हूँ, 6. ठीक है? ये जी example सर, तो 3 है values. 3 n is into 3. 3 plus 1 by 2, 4 by 2. that's equal to Yes sir. 3 into 3 plus 1 is 4, 4 by 2, 4. 2 1s Yes are, sir. 2 2s are, right? Yes sir. तो Yes, 6. कितना हो गया? 3 2s are 6. ये 3 टर्म्स का n value is 3, 3 plus 1 by 2, Yes. 3 plus 1 4, 4 by 2. तो ये sum of nth term का formula है S1 n into n plus 1 by 2. I'll give you the detail Okay. of this one. n into n plus 1 by 2. तो यहाँ पे अपने पास टर्म्स कितने हैं? 6 है. ओके, एक नेक्स्ट फार्मूला यू सी. Okay, S2, S1 formula, this is for S2, Yes. n into n plus 1, 2n plus 1 by 6, 2n plus 1 by 6. ये formula कहाँ यूज होता है? If you square it, these terms and add it like this one. ये अच्छा, आप बोलेंगे सर यहाँ पे अपने को आंसर 6 आया था, वेरीफाई नहीं हुआ. वेरिफिकेशन ये कब होता? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स रहना, लाइक दिस वन, 1 जी सर. 2 3, राइट? 1 2 3 में ये फार्मूला अप्लाई करके देख लीजिए. व्हाट इज सम ऑफ 1 2 3? जी सर. व्हाट इज सम ऑफ 1 2 3? 6 ना? 6 sir. So if you apply this 6 formula, 6. if you apply this formula, n value is 3 into 3 plus 1 by 2. How much it is? 3 into 3 plus 1 is 4, 4 by 2. So 12 this is 12 by 2 2 1s are, 2 by sir. 2s are, 3 2s are 6, like this. So it means what I want to say, sum of first and natural numbers. ये first and natural number नहीं होते ना, ये 2 4 6 फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बोलते ये ऑर्डर में रहना 1 2 3, फर्स्ट एंड 1 से स्टार्ट होना. सिमिलरली 1 स्क्वायर, comma 2 square, comma 3 square. Okay, if we square it and add it, what is the normal answer of this one? 9 plus 1 is 10, 10 plus 4 is 14. इसका आंसर है ना? जी सर. Do you understand this? Yes. If मगर n value, थोड़ा कंफ्यूज. हाँ बोलो क्या कंफ्यूजन है, बोलिए.
सम ऑफ nth टर्म का तो फॉर्मूला Sn is equal to n/2 into यहाँ पे कौन 2a से भी टर्म्स plus ले n सकते हैं आप, minus 1 into 2 यहाँ है पे ना? कौन से भी n टर्म्स ले सकते हैं, बट अगर ये फार्मूला अप्लाई करना है तो स्टार्टिंग से लेना 1 2 3 4 ऐसे टर्म्स लेना। ओके सर। समझ गए ना। अब ये अगर अपन ये 2 4 6 लिए तो ये 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा ना, ये फार्मूला हाँ एप्लीकेबल नहीं होता यहाँ। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई वो करने के लिए फॉर्मूला यूज कौन से भी करना टर्म्स ले Sn is सकते equal to n by हैं जी। n into n plus 1 by 2 first and natural number, sum of first and natural numbers, this formula is applicable when you square it and add it। चेक करेंगे कौन सा सर, S2 वाला? या s2 वाला स्क्वायर करके ऐड करने का चेक करेंगे। n value will be 3 into 3 plus 1 and this one is 3 to the n value 3 means 3 to the 6 plus 1 is 7, 7 by n into n plus 1 2n plus 1 by 6, it is equal to 3 into 3 plus 1 is 4 into 7 by 6, so it will goes like this 3 1s are 3 2s are 2 1s are 2 2s are how much 7 2s are 14, understand? Okay, हाँ और S3 वाला भी एक फार्मूला है, that also I will write it, that S3 formula is S3 that is equal to n square n plus 1 whole square by 4, n square n plus 1 whole square by 4. It means if you cube it and add it 1 cube comma 2 cube comma 3 cube, right? Usually what is the answer of जी this? सर। 3 power 3 27, 27 plus 1 is 28, 28 plus 8 is 30 कितना हो रहा, 28 plus 8 is equals to how much, 36 ना, 36 now. Yes, what happened? हेलो सर, आवाज? Okay, okay, I can सर hear आवाज you. सर। I can hear you. ओके No सर। problem. So 36. यस We can apply this formula and check it. This is 3 square. This is 3 plus 1 whole square by 4. 3 square means 3 multiplied by 3, that is 9. 3 plus 1 4. 4 square is 16 divided by 4. 4 ones are 4 fours are. This is 4 multiplied by 9. 4 nines are 36. So this is your 36 is the answer. It means अब अपन फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का एडिशन स्क्वायर करके ऐड करना, क्यूब करके ऐड करना, ये पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखे, राइट? तो पर्टिकुलर टर्म्स कैसा फाइंड आउट करते हैं, nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म, if there are natural numbers then how to add those terms, this is called arithmetic progression. Okay, ओके सर। any doubt in this? One example is नो enough, सर। or if you want we can give you one more example. Like this is also one of the best नहीं सर। example for AP 1 2 3 4 and so on. ये भी एक एग्जाम्पल हो सकती है इसकी, ठीक है ना? नहीं सर, एपी तो समझ में आ गया सर। हाँ, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द जीपी, geometric progression. जी यस So here the geometric progression is denoted with GP, geometric progression denoted with GP, and here the general term of this GP is a comma ar square comma ar to the power of 3 and so on, and the particular nth term formula is ar power n minus 1. इसकी अगर आप एग्जाम्पल देखें, if you want to see the example, that is 1 comma 1 by 2 comma 1 by 4 comma 1 by 8. What will be the next possible term? 1 by 16 comma 1 by 32. तो वहां पे यस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वी आर रिप्रेजेंटेड विथ डी द कॉमन डिफरेंस, हियर वी यूज दिस सिंबल स्मॉल आर टू रिप्रेजेंट, यहाँ पे देखिए कॉमन रेशियो इज इक्वल, देयर कॉमन डिफरेंस, हियर कॉमन रेशियो, द फार्मूला विल बी लाइक दिस T2 by T1. Okay, if you want to check
T2 by T1 1 by 2 by 1. It is how much? 1 by 2 only. Similarly, not compulsory to take these two difference. इधर भी ले लेके देखिए आप. T3 by T2 भी ले लीजिए, सेम आता. Example के लिए you can check it. T3 is here 1 by 4 divided by T2 is here 1 by 2. If I am simplifying, first fraction will be same, second fraction will become reciprocal. Now it will be like this 2 by 1. मालूम है ना? Fraction by fraction means second fraction will become reciprocal. जी It's a 2 ones are, it's a 2 twos are cancel, so the answer will be 1 by 2. So now you see common difference. You take any two difference, इसका भी ले लीजिए, 1 by 16 divided by 1 by 8, you will get the answer 1 by 2. So such type of progression is called geometric progression, where the common ratio is equal. Understand? ओके अब यहाँ पे अगर पर्टिकुलर कोई टर्म चाहिए आपको tn, so the formula will be a r power n minus 1 का formula, right? a r power n minus 1. This is called the first term, second term, third term, fourth term, fifth term, sixth term, seventh term क्या हो सकता है इसका? बोलिए. What is the second seventh term? 1 by, it may be 64 हो सकता है ना? चेक करेंगे. सेवेंथ टर्म वो चाह रहा है, चेक करेंगे, राइट? जी सर 7 हाँ सर फर्स्ट टर्म विल बी हियर 1, जी सर right? Common ratio will be here 1 by 2, right? है ना? Common ratio 1 by 2 है ना? तो सेवेंथ टर्म 1 by 64 आ रहा है, चेक जी करेंगे. T7 is equal to a is 1 into r value is 1 by 2 whole to the power of n minus 1. This is 7 minus 1. This is 1 multiplied by anything is same value, 1 by 2 whole to the power of 7 minus 1 is 6. So 1 power 6 is 1 only. 2 power 6, 2 multiplied by 6 times. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64. Got it? 64 Got it now? ये पर्टिकुलरली nth टर्म, कौन सा भी टर्म आप ये फार्मूले से शॉर्टकट यूज करके कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो. और इसका अगर आपको सम ऑफ nth टर्म चाहिए, लाइक एग्जांपल सम ऑफ nth टर्म, ओके, एसएन फार्मूला यहाँ पे दो केसेस पे है. केस वन, whenever r value is greater than 1, SN formula becomes a r power n minus 1 by r minus 1. This is the case 1. Case 2 will be whenever r value is less than 1. ये r की वैल्यू जो आई ना अपने पास, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में r की वैल्यू कितनी आई बाबा? जी प्रीवियस क्वेश्चन में r वैल्यू कितना आया? यहाँ है ना जी r वैल्यू, देखो कितना है? 1 by 2 सर 1 by 2. Is it less than 1 or greater than 1? लेस देन 1 सर लेस देन 1. तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे nth टर्म का? बोलिए. लेस देन 1 है तो Yes, 1 minus r सर yes, second case. Okay. यस So two formulas are there to find out a particular term. This is the formula, Tn formula I wrote here, and sum of nth term के लिए ये दो formula use करते हैं. This one and as well as this one. Okay. ये है आपका basic अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक्स. अब आप आएंगे आपके टॉपिक की तरफ, मूव हो जाएंगे. तो टॉपिक नेम इज सीक्वेंस. सीक्वेंस सर यस यस, योर टॉपिक नेम इज सीक्वेंस. वी कैन मूव ऑन. तो सीक्वेंस किसको बोलते हैं? देखिए, सिंपल एंड इजी डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड. ए सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ नंबर. ए सीक्वेंस is a set of numbers
set of numbers को अपन NUBMB numbers sequence is a set of numbers which satisfies certain condition, which satisfies certain pattern भी बोल सकते हैं, condition भी बोल सकते हैं, certain pattern लिखेंगे यहाँ पे। अब बोलेंगे आप एग्जांपल दीजिए। so every definition we can use the example, like I gave this example. See how many terms I am writing here. How many are there now? How many terms are there? 2 terms are there, right? Terms, yes, sir. What is the next expected term? 2, 4, 6, sir. 6. तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन क्या मालूम हो रहा? To write the sequence, we required minimum 2 terms. Yes, sir. Okay, and there is some rule. Using that rule, you can say me the next term. What is the next term? Next term is 8, sir. What is the next term? 8, 8, 10, 10, 10. 10. So there is some rule now. You are following that rule, and based on that rule only, you are going to tell me the next term, right? Yes, sir. That rule is called sequence, Sequence. which satisfies certain pattern. These set of numbers satisfying some pattern. Now, what is the pattern? Every next term is obtained by adding a particular number to the previous term. Is it okay? Yes, sir. So that particular term which we are going to add is denoted with T. That is called common difference. Common difference. Yes, common difference. So this is the one example of sequence. Another example. Second one. 1, comma 1/3, comma 1/3 square. अब बोलिए नेक्स्ट टर्म. Tell me the next term. 1/3, 1/3 square, 1/3 cube, 1/3 to the power Like of 4. that. So there is some rule you are following now, some pattern you are following, right? G. Those set G, of sir. numbers which satisfies certain pattern is called sequence. You understand the definition of sequence now? It may be geometric Yes, sir. sequence or it may be arithmetic sequence, but it should satisfy some pattern. That is called sequence. अब आइए अपन बात करेंगे सीरीज के ऊपर. जी सीरीज सर. समझ में आया? ये डेफिनेशन समझ में आया? हाँ सर. अब आप देखिए सीरीज. अब बोलेंगे सीरीज क्या है? So there is a small extension. If I am taking the sum of these all terms like 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus and so on, let us use the symbol Sn to represent this series. Okay, तो जब भी आप सीक्वेंस का सम करते, that is called series. समझ गया? सिंपल डेफिनेशन. सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज. रिपीट करिए मेरे साथ. Series. Sum of the sequence is called series, sir. series. Series. सीरीज के 3 केसेस होते. फर्स्ट होता when the series becomes convergent series, and another case when the series become divergent sequence, The divergent and series. it is oscillating. So a simple definition, if I am going to apply the limit n tends to infinity, Yes, sir. for this Sn value, suppose your answer will be L, where L is a unique value, unique limit. एक ही लिमिट जैसा 1/2 आ रहा है या 1/3 आ रहा, that is called convergent sequence. This is called what? Convergent sequence. Convergent sequence. Yes. Limit n tends to infinity. If we apply for this Sn, suppose your answer will be either plus infinity or minus infinity. The Plus type of infinity. sequence is called divergent sequence. Divergent series. Okay.
ओके ना? सर एक्चुअली मेरा लिमिट के कॉन्सेप्ट में थोड़ा वीक हूँ सर, कोई लाइक बात नहीं अगर बाबा, आप। अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपन, अभी स्टार्ट करें, अभी अपन एबीसीडी में, डोंट वरी। ओके सर। डोंट वरी, अभी तो समझ नहीं आ रहा ना? जी सर, जी सर। जी, अब देखिए ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस किसको बोलते हैं। इफ वी अप्लाई द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर दिस Sn वैल्यू, योर आंसर विल बी नॉट यूनिक, मतलब हर बार अलग अलग आंसर आते जा रहा। तो द टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस। एक बार 1 आ रहा, एक बार 1/2 आ रहा, एक बार -1 आ रहा, एक बार 0 आ रहा, अलग 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 आंसर्स आते जा रहे हैं। इन्फिनिटी अप्लाई करे तो इट मीन्स दैट द सीक्वेंस इज नॉट convergent, not convergent nor divergent, it is oscillating sequence। ठीक है, सेम आंसर आया तो कन्वर्जेंट, मतलब कुछ तो भी आंसर आना, 1/2, 5, -1, 0, कुछ तो भी आना, देन कन्वर्जेंट। जी। इन्फिनिटी आया तो डाइवर्जेंट। सब अलग अलग आ रहे, एक बार इन्फिनिटी आ रहा, एक बार 1/2 आ रहा, एक बार 0 आ रहा, इट मीन्स दैट नॉट यूनिक, मीन्स ऑक्सीलेटिंग। समझ नहीं आया? ओके सर। जी सर। So there are three types of series: convergent series, divergent series और oscillating series। अपने जो प्रॉब्लम्स रहते इन दोनों की बेस पे करके रहते, कन्वर्जेंट सीक्वेंस और ठीक है सर। डाइवर्जेंट। कोई भी क्वेश्चन में आपको ऑक्सीलेटिंग प्रूव करने का कोई भी एग्जांपल नहीं आता आपके पास, एक क्वेश्चन करके देखेंगे क्या हो रहा। सो जी सर। अभी तक कुछ डाउट है? नहीं, अभी तक तो डाउट नहीं है सर। चलिए एक क्वेश्चन करके देखेंगे, आपको पता चल जाता भाई करना क्या है सर। ओके, so here the question is just for example, let us see। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू सपोज इन्फिनिटी। पहले तो आप मेरे को ये बोलिए, ये सीक्वेंस है या सीरीज है? बोलिए, व्हाट वन इज इट प्लस सीक्वेंस टू और प्लस सीरीज? सर दिस इज सीरीज। सर दिस इज एक्सेलेंट। सीक्वेंस, सॉरी नो नो सीक्वेंस नो इज। नो, सीक्वेंस नहीं होता बाबा, सीरीज सम कर रहे ना। हाँ सीरीज है जिसमें सीक्वेंस का सम रहता सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड सीक्वेंस? सर सीरीज इज a patterned progression. Sequence is sum of series. यस, ये हो गया आपका सीक्वेंस, 1, 2, 3। इफ आई एम टेकिंग द सम ऑफ दिस सीक्वेंस इट इज बिकम सीरीज, Okay. राइट ना? ये 1, 2, 3 कामा अगर है तो सीक्वेंस हो गया, अगर उसमें प्लस लिख दिए तो सीरीज हो गया, खत्म। ठीक है सर। ठीक है ना? अब इसको अपन सॉल्व करके चेक करेंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट दिस वैल्यू इट इज इक्वल टू Sn। Sn इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, 1 + 2 + 3 + 4 फोर। and so on। I gave one formula, sum of first and natural number का फार्मूला क्या है बाबा, बोलिए क्या है फार्मूला? फर्स्ट टेन फर्स्ट एंड एस एन नेचुरल इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई डी बाई 2, बाई n टू, into सॉरी n बाई टू, plus एन 1 इंटू by एन 2। प्लस वन बाई टू। Okay, n means, दिस इज फॉर okay, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। yes, exactly। Okay, यस right सर। ना? तो कैसे चेक यस करते हैं सर। अपन? कैसे चेक करते हैं डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट, कैसे चेक करते हैं? वी हैव टू अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स, राइट? यस सर। राइट, तो अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से अप्लाई करो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn is equals to limit n tends to infinity n into n plus 1 by 2। So wherever n is there, if I am applying infinity, what will be our answer? Tell me। अच्छा देखिए मैं आपको बताता हूँ, infinity is the quantity or is the value, if we operate जी। anything with infinity, your answer will becomes infinity।
like infinity plus 1 is infinity, infinity minus 1 is infinity, infinity by 2 is infinity, infinity whole square is infinity, infinity plus 0 is infinity, infinity power 3 is infinity. Any operation depending upon infinity, your answer will be is infinity only. infinity. infinity एक Okay, ऐसा sir. चीज है जिससे मल्टीप्लाई करा उसको infinity बना देता हूँ, Hmm. समझे? तो यहाँ पे infinity into infinity plus 1 by 2, infinity plus 1 is infinity, infinity into infinity is infinity, infinity by 2 is infinity, so your answer will be infinity. तो कौन सा आंसर आया अपने को? which case we are now? We are in second Infinity. case, तो so फिर we are पॉजिटिव getting, इन्फिनिटी आया तो yeah, डाइवर्जेंट है सर. हो गया, that's it. Therefore you write our solution, therefore given series is divergent. डाइवर्जेंट. given series, क्या लिखेंगे? सीरीज लिखेंगे या सीक्वेंस लिखेंगे? गिवन सीरीज सीरीज लिखेंगे सर. या सीक्वेंस लिखेंगे? बोले सीरीज लगता सर. सीरीज लिखेंगे क्योंकि वो सब में ना, तो आई एम यूजिंग दिस शॉर्ट फॉर्म DIV फॉर डाइवर्जेंट, CON फॉर कन्वर्जेंट. अंडरस्टैंड? ओके सर. समझ में जी आया सर. सर एग्जाम? अगर कोई भी ऑपरेशन पे इन्फिनिटी आया तो माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी कैसा रहता सर? पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी का केस भी अराइज नहीं होता, वो खाली टू अंडरस्टैंड है, हमेशा इन्फिनिटी होता हो. ओके सर. ठीक है, वैसा लिखते हैं अपन प्लस आर माइनस इन्फिनिटी बोल के. जैसा कि स्क्वायर वैल्यू आ गई समझो, 2 स्क्वायर राइट, रूट ऑफ 2 ऐसा है तो प्लस आर माइनस में लिखते हैं ना. इन्फिनिटी अगर स्क्वायर में है तो नेगेटिव इन्फिनिटी भी होता, राइट? ओके. ठीक है, एक और एक एग्जांपल लेके अपन चेक करेंगे वेदर इट इज कन्वर्जेंट और वेदर इट इज डाइवर्जेंट और वेदर इट इज ऑक्सीलेटिंग. ऑक्सीलेटिंग का केस अराइज नहीं होता, फिर भी अगर आपको चाहिए बोले तो मैं ऑक्सीलेटिंग के भी ऊपर एग्जांपल्स बोल सकता हूँ, मगर नो नीड, एक्चुअली नो नीड, राइट? हम्म. ये ऑस्किलेटिंग तक पढ़ाई भी नहीं सर हमको, बस कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ही कन्वर्जेंट सुना था. डाइवर्जेंट ही बस हो जाता बाबा, ऑक्सीलेटिंग वाला केस अराइज होता नहीं असल असल में. हाँ, ओके सर. ठीक है सर. चलिए एक और दो तीन एग्जांपल्स लेके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के केस को देखेंगे अपन क्या हो रहा हो, राइट? एक एग्जांपल ले जी लेंगे, सर. एक और एग्जांपल ले लेंगे. सपोज इफ यू हैव ए another example I'll take like this one. Like suppose you have ये कुछ वैल्यू है an, सम ऑफ nth टर्म है इसका, nth टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज दिस वन, जी सर. n स्क्वायर माइनस 2n बाई 3n स्क्वायर प्लस n, राइट? अब बोलेंगे सर जी सर. प्रीवियस में और इसमें क्या डिफरेंस है? मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ. प्रीवियस क्वेश्चन अपना था ऐसा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका nth टर्म क्या होता बाबा अगर मैं इसको कंटिन्यू लिखा तो क्या होता? nth टर्म बोलता n होना इसका ना, nth टर्म n होता, राइट? जी सर nth टर्म तो n होता है. यस, कोई भी सीरीज का कन्वर्जन डाइवर्जन चेक करने से पहले we required the nth term of that particular series, right? यस सर. अब ये जो 1 प्लस 2 प्लस था उसका nth टर्म का फार्मूला अपने को मालूम था n इंटू एन प्लस 1/2, इसलिए अपन डायरेक्ट लिख दी. अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक nth टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट? वी आर यस गोइंग सर. टू चेक वेदर दिस विल कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. कैसा करते चेक आप बोलिए? सोल्यूशन हाउ टू चेक? कम ऑन, वी हैव टू सर अप्लाई. लिमिट लगा के सर. वेरी वेरी गुड, एक्सेलेंट, यू लगा के अंडरस्टैंड. वी विल सी वेदर पॉजिटिव है नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो डाइवर्जेंट रहता, और अगर एक वैल्यू है तो कन्वर्जेंट रहता. Excellent, correct. Limit n tends to infinity, n square minus 2n divided by 3n square plus n. Right. So what I am doing here is limit n tends to infinity. From the numerator, is it possible to take n square common? N square common layer numerator. Here one left,
एन स्क्वायर को आउटसाइड ले तो 1 लेफ्ट होता ना. हेलो 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 हेलो